गाइस वेलकम भाई, वेलकम वेलकम। आप लोगों का स्वागत है फिर से गॉड ऑफ वॉर में। भाई अब आ गए हम वापस से। हम नॉर्म से मिल लिए थे, कुछ ज़्यादा चीज़ें पता चली कि हम हेimdall हमारे बेटे को मारना चाह रहा है एसगार्ड में जाके। ठीक है भैया, अब क्रेटोस क्या करता है देखते हैं। ये पता चला और थोड़ी बहुत फाइट करी कल हमने। फाइट तो करनी है इस गेम में, बहुत फाइट है। अब ये मेरे को चेस्ट लेनी है, कहाँ से लूँ मैं? इधर चलता हूँ ज़रा। ये वाली ले ली, उखाड़ ली मैंने चेस्ट। उखाड़ गई, तोड़ ही दी बिल्कुल ही लगभग। टूट के मिलती है क्रेटोस अपनी पावर का, वो एग्जांपल देता ही है। इधर से चलना पड़ेगा फिर लगता है। हाँ, इधर से ही चलना है। Even supposing we're all perfectly comfortable plotting an assassination, and I, for one, am a mite rusty at that measure, we've got no way to reach Heimdall, and no way to kill him if we did. I have killed gods greater than him. I don't doubt that, brother, but it's hardly my point. यही चेस्ट है, हाँ यही चेस्ट है। चलो भैया। इधर क्या, इधर क्या? ओह, बड़ी चेस्ट। Kratos, I see something. क्या देख लिया ऐसा ऊपर? Up तो there. जाना ही है। एक मिनट रुको। क्रेटोस इतनी जल्दी क्या ऊपर जाने की? चीज ले। एक सिल्वर रह जाता, यहाँ भी रह जाता। That's the wrong way up if you want to get out of here. अरे एक मिनट रुक तो जा, देखने तो दे, एक्सप्लोर करने दे। अरे ये तो महीना पहुंच गए, पर एक चेस्ट रह गई मेरे लिए। चलो भाई ऊपर। Look, I think we're missing the Norn's message here. We've all got our tendencies, and yours is to run headlong into danger to protect the ones you love. I do not intend to change. Not about that. Why should you? Apparently my tendency is to kill the ones I love. Freya. I don't need you to comfort me. Either of you. Their accusation was cruel. None of us believe. The truth can be a cruel thing. Anyone care to argue with that? No. But Baldur's fate had many causes. Prophecy among them. How do you mean, brother? There are many tales in my homeland of those who fulfilled prophecy by attempting to avoid it. So it was when Freya tried to protect Baldur. And so it was when I accused my son of going to Asgard. Then we agree. It'd be foolish to go after Heimdall. No. If Heimdall must die for Atreus to live, then Heimdall must die. क्या How हुआ? can you say that, knowing what you know? Because if Heimdall is a threat to my son, I must act. It is my... Your nature. Well played, Norns. सही बात। वही मैं बोला ना, क्रेटोस क्रेटोस है, बीन क्रेटोस। छोड़ूंगा नहीं साले को। अरे इधर चलने का है क्या बाबा? ले चलो घुमाओ। अरे ये ऊपर की चला जाता है बार बार। ऊपर का ही चले जाते हो, रिस्ट्रिक्टिव की वजह से ऊपर चला जाता है। चल ले भैया। चलिए, ये यहाँ से जा सकते हैं वापस हम। अब रुक जाइए जरा, देखने दीजिए कहाँ रखा है ये चेस्ट। देखा नहीं मैंने, ये चेस्ट कहाँ रखा था? क्या मजा आके बिल्कुल। ये रहा, यहाँ है चेस्ट।
एक और कहाँ है फिर? दो हो गई इधर, तीसरी कहाँ है? होनी तो तीसरी इधर ही चाहिए कहीं। ये रही। चलो 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 चलो। एक और बार रेज मिली अपने को, इसका मतलब ठीक है भैया। इधर से वहां इधर चलना है अपने को, चलो भैया। Let us find a gateway. Return home. Consider our plans. Listen, brother. वो सब Don't ठीक make है। any hasty decisions. Why don't you blow off a little steam? I'm हम्म, sure there was some loose end we meant to circle back to. Give your mind a little time to process everything. I suspect there's unfinished business here at the lake, though I'm certainly happy to spend time somewhere other than Midgard. It's your choice, brother. लिवाइटन एक्स का क्या है भैया, क्यों नहीं आ रही है? Nothing appeals to you? अरे अपील क्या अभी एक्स, मतलब ये अपग्रेड करने का है ना। Always a joy to work on these. धन्यवाद आपका। इसका पोमेल गिरा रहा है गिरा रहा है गिरा रहा है, क्या बढ़ा रहा है? ओह नाइस, ये बढ़ाता है, ये अपग्रेड करूँ। आर्मर एमुलेट लाओ भैया, इधर लगाने दो मेरे को। ये चलो ठीक भैया। अब इसके मैं फेवर्स देख लूं जरा। मैप गोल्स फेवर्स क्या इधर गए? मिडगार्ड के ना, गाइड लाइट के लिए सीक्रेट कर्स ढूंढते ना। ट्रैक भाई चलाओ। Brother, about the oracles of your lands, would you say they manipulated events? Did they have an agenda? I do not doubt they held their own interests first, but in my experience, they could be easily fooled by their own prophecies. Would that be a specific experience, brother? Once, I sought the Oracle for a means to break my bondage to Ares. One priestess had visions that showed her Olympus would be brought to ruin by the god of war. Therefore, she helped me, intending to undermine Ares and protect her realm. She did not foresee that I would kill him and take his office. In the end, I proved her vision of doom correct. So the oracle herself brought about the very future she hoped to avoid. I suppose we're in fine company at that. How strange. I've never seen that building before. Aye, very strange indeed. Let's take a closer look. ये मिल गया भैया एक मिस्टिक गेटवे। ठीक है भैया चले अब ये। अरे कौन उड़ गया रे? यल्ला
चलो ठीक है, आगे बढ़े। Wait, the shield that's blocking the entrance. It looks exactly like the one from Tyr's statue. It's another piece of Tyr's likeness sent flying across the lake. Ended up lodged right into this building, apparently. All this must have been hidden behind the ice until that shield smashed through it. ये कैसे होगा रे? इसको तो पता ही नहीं। करना जरा। Nothing inside. But we can't reach it with the shield. ना ना Doesn't ना, look like you can brute force it. ये मिल गया पर। Sigil arrows won't work on this. Purifying bone. ये तो खुला नहीं ना, मेरे को यहाँ से आना था। हमको वहीं से जाना है, तो वो अंदर से खुलेगा। ठीक है 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 ठीक है। Could be useful. कुड भी क्या, कुड भी ऐसे यूजफुल। अब क्या देखा तूने, ये बता। ये देखा। Well done. Now we just need to open the gate. Well done.
It was not intentional. Oh, sure. My arrows can't go through walls, I'm afraid. ले भाई ताना मार रही मेरे को। Together again. Mimir, does this look like an abandoned treasury to you? Aye, it does. It's Seagram's family crest. Looks like a vault door to me. Now that we have both halves to that key, we should see if it matches that lock. ये भी हो गया, बस रुक जाओ। एक ही हुआ है क्या? हाँ एक तो है। अब देखने दो देखते हैं भाई, मिल तो जाना चाहिए। ये ले Every attack! टट्टे साले। Oh, sorry, Freya. Here sits Prince Dogger. I can't believe he's still here. Yeah. Prince Dogger? That the corpse of Sigrun's brother? How did you end up like that then? Freya, why won't you answer me? क्या हो गया भैया? Are you certain you want to read this? No, brother. You do it. It seems Sigrun put a curse on her brother for killing the Mad King. No. Truly? She did not know the Mad King had murdered her family. Once she did, it was too late. She had cursed her brother. That is why she joined the Valkyries. To atone. You knew all about Sigrun's family, didn't you, Freya? It was not my story to tell. Funny. Learning all this only makes me love her more. She chose me despite my flaws, my regrets. Knowing she has some of her own makes me feel closer to her. I am glad to hear it. अरे ठीक है रे, मेरा ट्रेजर क्या है? सिल्वर से ले दो भाई यार। अरे और कहाँ है भाई? ये कहाँ है? इसके लिए आओ। तो कैसे आ गया? ये मेरा ट्रेजर है। Schematics, eh? You know of him? Aye. One of the most gifted dwarven smiths around. Until he developed a conscience. यहाँ रख रखा है क्या? छोटे से ट्रेजर है, बस जरा सा हल्का सा। हल्का सा तो नहीं होगा इन में, बहुत ज्यादा ट्रेजर होगा, पर फिर भी ठीक है, व्हाई नॉट, क्या हो। मेरे को तो बस ये ढूंढनी है एक और, वो कहाँ है टॉर्च सी? एक और टॉर्च कहाँ है रे? इधर तो दिखी नहीं मेरे को कहीं पे भी। वो रही ऊपर ऊपर।
ऊपर हरा है। चलो भाई। तीन और ढूंढने फिर लास्ट है इसका मतलब ये हो गया सब लगभग सब हो गया सारा हो गया चलो यहाँ चलते हैं। Circling back to the topic of prophecies brought about by the efforts to avoid them, I think I can recall such a story as you mentioned, brother. A Greek tale for the stage. Rather lurid, but very popular. You know the one? Every Greek knows the tragedy of the Theban king. Yeah, word gets around about that sort of thing. Is that a frost troll? He won't be happy to see us. रुको 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 आ रहा हूँ। ए भाई ये इधर आराम से क्यों बैठा भाई? क्या गूंगू गागा क्या गूंगू गागा कर रहा है वो? गूगू गागा ये रुक जाओ आ रहा हूँ। लड़े चलो टोल से लड़े। ए भाई ए भाई और भाई Incoming! गूगू गागा हो गया इसका तो। ले गूगू गागा यल्ला ले बाय बाय गूगू गागा। ले सही में गूगू गागा हो गया इसका तो। कॉन्स्टेंट मार दिया मार दिया मार दिया। एमुलेट क्यों मिल रहा है यार मेरे को? वो फ्रोजन फ्लेम दो कोई। एक्स अपग्रेड करने की है मेरे को। एमुलेट पकड़ा देंगे। अरे एमुलेट का मैं क्या करूँगा? फ्रोजन फ्लेम चाहिए अपन को। I must say, I think we make a good team. With my brains, Kratos' brawn, and my lady's, Wisdom, magic, से ability to tolerate you for long periods of time. I was going to say brutality. That works. चलो कुछ में से क्या इधर मेरे से देखा नजर तेज है पाई की। चलो भैया फिर एमुलेट पकड़ा दिया। एक तो एमुलेट से मैं तंग आ जाऊं इतने एमुलेट पकड़ा दिए। अरे फ्रोजन फ्लेम कब मिलेगी रे बाबा? मेरे को अपनी एक्सेप्टेड करने की है। हाय इधर भी कुछ है। हाय इधर That भी must be कुछ है। Tyr's helmet from the statue. चेस्ट आर्मर मिला है था। Win mines, not wars. Well, I think that's the last of it. Doubtful we'll find any more interesting bits. I always admired the love Tyr inspired. Where I come from, gods of war are not revered in such a way. Not all gods of war are the same, brother. No, they are not. वही ये हो गया ना सारा हो गया इस एरिया का सारा हो गया। फेवर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बॉम
अक्रॉस द डैम्स का क्या था भैया? गर्मी वाले एरिया में चले। कहाँ रे अपना एग्जिट? इधर ही है कहीं। What's in Svartalfheim? We still have unfinished business there. I helped construct some mining rigs throughout the bay. Part of my non-violent attempt at bringing the dwarves to heel. Why am I not surprised? Lead the way. एल्फाइम भी चलने का अपने को, चलेंगे एल्फाइम भी, चलो भाई। आज सारे फेवर वाले रह रहे बस, फिर तो बस ज्यादा एक्साइटेड ना होकर। इतना अच्छा लगता है रोशनी रोशनी। अब बताओ इसका कहाँ है? मैप मैप गोल्स फेवर इन सर्विस ऑफ एसगार्ड को ट्रैक करो भाई। 3 है ना भैया? मुर्गी मुर्गी, चलो इधर चलें। आ जाओ, बोट पकड़ो। क्या नहरों से जाना पड़ता है भाई, लेकिन ये तो जल्दी जल्दी चला थोड़ा। लास्ट 45 हम पता नहीं कौन से एपिसोड में गया था। टीआर के बाद तो कभी गया ही नहीं मैं, जरूरत ही नहीं पड़ी मेरे को जाने की। मैंने सोचा बाद में करेंगे बाद में करेंगे, अब आ ही गए हैं तो कर ही लेते हैं फिर। I must say, Mimir, of all the cruelties you enacted on Odin's behalf, these rigs were certainly the most subtle. Mimir. Odin wanted the dwarves under his control, and well, I convinced him he could buy their allegiance instead of demanding it outright. A trade agreement of sorts. क्या बात? Is that crane still functioning? So, one of your mining rigs is here, Mimir. See the smoke above us? That's where we're headed. Let's see if we can shut it down. ये ना ऊपर, ठीक है। Incoming right side. कीड़े मकोड़े मार रहे वो लोग। गॉड ऑफ वॉर कीड़े मकोड़े मारने आया है। Freya, could you heal the soil here? Make it fit to hold a seed. Maybe. Undoing generations of smoke, metal, oil. It'd be an undertaking, and not a quick one. You do not have the time, Mimir. Perhaps one day. DLC लाओ यार इसकी कोई, मतलब आ गई है, मतलब वाला हाला आई है, पर फिर भी एक और DLC लाओ या अगले गेम में पता चलेगा मैं कि भैया सब ठीक हुआ है नहीं हुआ है। अगले गेम में हमें ठीक करना है सब कुछ। कीड़े मकोड़े, अरे 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 हेल्थ क्रेटोस भी बड़ी जल्दी करता है। What did you find? A The seed of item? Yggdrasil? To Muspelheim. Where do you reckon it leads? The gauntlet, perhaps? The what? Combat trials. I attempted them several years ago. With Atreus? Yes. Then we should find the other half of the seed. See where it leads. ट्रायल मिलेगा क्या? एक और आर्मर? अरे कहाँ से जाना, कहाँ जंप करके जाना भैया? कैसे जंप करेंगे अपन? ये क्या ही पड़ा था? और ये रिसोर्सेज
Learn anything? Well done. Now we can cross. कहाँ से क्रॉस? Incoming right side! कैसे मार रहा हूँ इन्हें? ज्यादा मार दिया बेटा तू। चल किसक शील्ड से मार दिया। अरे ये भी तो इतने नाटक क्यों है भैया? अब होगी लड़ाइयाँ। पहुंच लिए बस पहुंच लिए बस। इधर आ फटाफट इधर आ जल्दी जल्दी थोड़ा है ना बच के आ जल्दी। रुकते नहीं ऐसे। Enemies on the left! Nasty hit! You alright, brother? Enemies behind you! Behind you! Look out! ले खा। और Brother, get up! लॉल गलत टाइम पे गलत चीज ही करता हूँ ना। Enemies on the left! On your right! Enemies to your left! Behind you! Look out! ले Got him!
rig's likely chock-a-block with materials that could help us. I'd grab whatever it spits up in the process. चलो भाई खोल। How long did it take the dwarves to realize you duped them? Oh, somewhere between Odin demanding a year's worth of weapons in a month and their realization that all the gold in Asgard couldn't give them what they actually wanted. Which was? A choice. क्या? What you just picked up there is pure Svartalfheim ore. It won't be of use in the rig anymore, but perhaps our Huldra brothers could craft something from it. Svartalfheim over है pure, ठीक है बेटा। Essentially harnessing resources that would otherwise go to the dwarves. You believe deactivating the mining rigs will encourage the dwarves to reclaim their independence? एक मिस्टेक गेटवे भी मिल गया इधर। I hate the bay. The smoke from the rigs, my throat closes up. There's another mining rig on this island, brother. Smell that smoke? Why would the dwarves agree to allow the Aesir to siphon off their resources? That's the heart of it, eh? You lied to them. I lied to them. Look at it. I didn't realize how much there'd be to explore here. जी बिल्कुल, तभी तो आए हम इधर। अरे क्यों सर आप? Incoming poison up above! अरे भागेगा तू? Yelpa! Nightmare on the left! नाइटमेयर भी आ गया इधर। Incoming back here! ये नाइटमेयर की तो Poison at your back! तेरी एट तेरी Behind you, brother! Poisonous spit incoming! Knock that grim down! ये लोग चिपकली को यूज नहीं करा मैंने, एनवायरनमेंट में यूज कर लेता मजे आ जाते, पर ठीक है। Your deeds seem to be catching up with you, Mimir. Smart as cheap alive.
To the blacksmiths of Svartalfheim, the creation of a weapon was a sacred thing. But Odin just wanted as many blades as he could get, as fast as he could get them. With every stolen resource or mediocre blade, the dwarves lost a bit of themselves. ओडिन ने सबको परेशान कर रखा है। अब ट्रेस के पीछे पड़ा है। हट ओडिन, कुछ हुआ नहीं वैसे उससे, फालतू में यूज हो गया वो। दो एप्पल और ढूंढने हैं भैया। ये वो Dwarves survived because of you. I am not wrong there, brother. Odin would have wiped out every last dwarf in Svartalfheim. If he couldn't use their skills, no one could. Those mining towers. They're blasting filth into the air. Another mining rig's on this island. Just follow the smoke. You speak of your deeds with shame. Do you regret not allowing Odin to kill them? I don't. ये तो You could खतरनाक सी likely लग रही है। swing across the gantry. That position looks correct. Those barrels. I smell fuel. Bet a spark from your blades would cause quite a boom. The ground here is unstable. Dropping from a high enough vantage point might break it. सिल्वर तो है, सिल्वर ही बहुत है मेरे इधर। So, Mimir, you're hated by an entire realm because of one mistake. Deservedly. Didn't say it wasn't. I'm just... Well, I know how it feels. चल तेरी। Huh. Impressive. इधर से जाएं अब इधर के लिए।
battery's in the right position now. Yeah. This equipment's sturdier than I thought. Behind you! Up there! Coming this way! बड़ी जल्दी मार दिया। It is done. If you could call so meager a task done. A wee drop out of the Asgardian occupational bucket. You must live with your deeds. Do not be troubled by them, brother. Oh? And why not? You were given an impossible problem. Do not blame yourself for failing to solve it. I'm sure the dwarves would feel differently. This doesn't fix things. No. पहली बार क्रेटोस ने किसी को But it ब्रदर is the बोला। start. A reminder, brother. The fine slag we collected could be of considerable use in the hands of Brock or Sindri. सब उठा लिया ना। चलो भाई अब यहाँ क्यों रुके हम। चलो चलो हो गया सब उठा लिया। With those rigs disabled, I can actually draw a full breath. पोजिट मिला एक। Something else I recall about that Greek player mentioned, if you won't take offence at the critique. As a work of performance, it consisted almost entirely of watching people give speeches and receive terrible news. Might have been nice to see more events dramatized instead of described. It is Greek tradition for a story to unfold in a single time and place uninterrupted. It is more clear. If you say so. ये तो बस यहीं तक हुआ है। ये कौन सा एरिया पता नहीं, जाके देखते हैं। यहाँ आ रखे हैं हम। ओहो ओहो, ये भी तो है। एक बार ही टेस्ट करके आए जरा। चले आएंगे वापस तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार टेस्ट तो करना पड़ेगा। हरा भी सकते नहीं, हरा सकते नहीं। मुझे नहीं लगता हरा पाऊंगा मैं इतनी जल्दी से, पर ठीक है फिर भी चला जाए देखने।